So, hello English learners. Today we are going to learn the ninth chapter of this book, Mass Spoken English book, and this is the ninth chapter which is about the wanted. Okay. So yesterday we learned about the want. Okay, how we are going to use the want and in present, past, and future. So now today we are going to learn about the wanted, when we have to use the wanted and what is the mean of this wanted. Okay, so फॉर एग्जाम्पल जब हमें अंग्रेजी में ये बताना हो कि हमें कोई वस्तु, इट मीन्स ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को चाहिए था, ये मुझे चाहिए था, जैसे मुझे एक मोबाइल फोन चाहिए था, सो हम यूज करेंगे wanted. ओके, बिकॉज इफ वी आर गोइंग टू मेक एनी पास्ट टेंस वी आर गोइंग टू यूज the second form of verb. Okay, so because of this we are going to use wanted. Like I wanted a phone, मुझे एक फोन चाहिए था. I wanted a house, मुझे एक घर चाहिए था. I wanted to meet him, मुझे उससे मिलना था. Okay, so we can use the wanted, and wanted we are going to use with every subject, like with plural subjects or singular subjects, like I wanted, we, you, they, and he, she, it, or and name. Every with every subject we have to use wanted. Okay, so I hope you understand when we are going to use the wanted and what is the meaning of this. It simply means like past में मुझे कुछ चाहिए था. I wanted a milk, मुझे दूध चाहिए था. So सभी सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम wanted का यूज करते हैं. wanted का निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, इफ वी आर गोइंग टू मेक द wanted का निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते टाइम वहां पर did का यूज करते हैं. Okay, so if you are going to make the negative interrogative or interrogative negative, you have to use did, because we are making the past tense. जब वो वांटेड का नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे, सो उस वक्त हमें एक चेंज करना है. वो चेंज करना है, वांटेड हमारा वो वांट हो जाएगा. यस, वांटेड वो वांट हो जाएगा. in past simple tense, if we are going to speak in past simple tense, we are using wanted. Like I wanted milk, मुझे दूध चाहिए था. but if we are going to make the negative sentence, I did not want milk, मुझे दूध नहीं चाहिए था, इस तरह से. ठीक है, सो वांटेड के कुछ सिंपल सेंटेंसेस हैं. लाइक मुझे पैसा चाहिए था, मुझे पैसा चाहिए था. आई वॉन्टेड मनी, आई वॉन्टेड मनी. हमें पर्स चाहिए था. वी वॉन्टेड पर्स, वी वॉन्टेड पर्स, उसे छुट्टी चाहिए थी. शी वॉन्टेड लीव, शी वॉन्टेड लीव, उसे छुट्टी चाहिए थी. सो लाइक we take examples, and now negative and interrogative sentences. For there are 5 type of sentences, like simple sentences, subject, wanted, and object. Negative sentences, subject plus did plus not plus want plus object. Then did, subject, want, and object. Then did, subject, not, and want, and object. So मुझे कार चाहिए थी, I wanted car, मुझे कार चाहिए थी. I wanted car, simple. मुझे कार नहीं चाहिए थी, I did not want car, I did not want car. Yes, I wanted car in past simple sentence. I wanted car, I did not want car. मुझे कार नहीं चाहिए थी. क्या मुझे कार चाहिए थी? Did I want car? क्या मुझे कार नहीं चाहिए थी? Did I not want car? मुझे कार क्यों नहीं चाहिए थी? Why did I want my car? मुझे कार क्यों चाहिए थी? Why did I want my car? So इस तरह से हमारे पास बहुत सारे sentences है. There are 32 sentences, okay, which we can practice, but I'm going to practice only 5 sentences which you can see. Okay, रीना को नई साइकिल चाहिए थी. रीना वांटेड अ न्यू बाइसिकल, रीना वांटेड अ न्यू बाइसिकल. मुझे कुछ नमक चाहिए था, आई वांटेड सम सॉल्ट.
उसे पैसे चाहिए थे, he wanted money, नेताओं को वोट चाहिए थे, लीडर्स वांटेड वोट्स, किसानों को अच्छी फसलें चाहिए थी, फार्मर्स वांटेड गुड क्रॉप्स. So there are lots of sentences which we can practice, but you just got the overview how we are going to use wanted. Okay, and practice sheet, this is a practice sheet. We wanted English knowledge, हमें English का ज्ञान चाहिए था. And tomorrow we are going to learn about the use of let. Yes, use of let tomorrow we are going to learn. And I hope you learn about the wanted. Okay, so just I will suggest you, like, keep learning, keep growing, and be 1% better in your life. Okay, so wanted we learn, and tomorrow we are going to learn about the let. Okay, let, be ready. So thanks.